आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं मेहोनी कंपनी करके। ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जिबिट्स दिए हुए हैं। एक्चुअली मैं ये पूरे क्वेश्चन को ना टाइमर लगा के करना चाहता था। सो लाइक नाउ इट इज 7। तो ये 7 से हमें 8:30 तक ये पूरा क्वेश्चन करना है और टाइपिंग में पूरा का पूरा। ठीक है ना। सो लेट्स ट्राई दैट। मेहोनी कंपनी इज a listed holding company based in the eurozone. The company and its subsidiaries specialize in large-scale infrastructure around the world. Mahoney Company's board is due to review an investment proposal after being invited to work on a regeneration policy by the government of ACCA. The objective of the project is to significantly improve the capacity of ACCA's large shipping port. ACCA has a relatively close economy with significant protectionist measures on imported goods and services. Amasia's agricultural sector is the country's main source of employment and has benefited to a large extent from its protectionism. The new government has announced a series of reforms designed to boost economic growth. Reforms designed to boost economic growth and tackle an unsustainable budget deficit and the country's high employment rate. As part of these reforms, the government is keen to establish a customs union with its neighbor. The principal objection to this proposal is the harm it may cause to the growth of Amasia's new car manufacturing industry. Other topics to be discussed at the next week's board meeting include how to hedge the disposal proceeds from the disinvestment of a Brazilian subsidiary, Oliveria, Oliveria, and an intra-group settlement Mahoney Company expect to receive from its Canadian subsidiary, Yevis Company. These funds are not expected to be available for 6 months, but will be used to repay bridging loan, which is due for repayment on the same date. उनको पहले क्या करना है? Explain why countries might impose protectionist measures on imports and possible benefits if Indonesia forms a customs union with its neighboring countries. तो ये वाला जो है ये मैं सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर पे लिखना चालू कर देता हूँ. Firstly, the countries might impose protection measures on imports due to a variety of reasons, such as the country the country might be protecting the domestic companies in the country as they know that once the foreign imports are are being um, are being sold in the country, the population or the public would tend to buy those, that is the imported goods, rather than the domestic products. This is due to the fact that customers have a tendency of thinking that imported goods are better in quality. ठीक है. उसके बाद the protectionist measures also country also helps a country to understand what
its reputation is in the global market. That is that is um how badly how eager are the countries to expand their markets in the in their particular country. Also, protectionist measures on imports also lead to higher tariffs and duties being paid by the yeah uh, by the trader countries, thus leading to higher generation of revenue for the country. Now we come down to the possible benefits if amnesia forms customary with the countries. Some countries might be protecting themselves against some countries might be protecting themselves against the foreign sales and thus would make them focus on generation of the same goods inside their domestic market. So, not leading to rely on the imports itself. The principal objection, government has announced sales reforms and sustainable budget. Other topics to be designed. If a customs union is formed, just similar, if a customs union is formed with the neighboring countries, then the tariffs and custom duty and the duties paid on the imports and exports will get cheaper, or in some cases might also be removed, thus benefiting the public, or thus benefiting the population of both the countries. This allows the company to grow. This allows the company to grow and expand. This allows the countries to grow and expand their horizons beyond just their
borders, just their borders. Mm, because of cheaper or no tariffs and duties, countries might countries will have more money in their hands to spend on other development issues within their country. More money in their hands to spend on other development areas within the country, such as infrastructure, infrastructure, sports, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स, और क्या बोल सकते हैं? इंपोर्ट्स भी हो गया, हाँ, इंपोर्ट्स स्लैश एक्सपोर्ट्स with with non-neighboring countries, culture, sports, industry formations, industry expansion, industry expansions, imports, exports, PC, ठीक है ना? The trust of the nations can also lead to um, harmony and peace. Actually, harmony within the public. ठीक है, ये हो गया। इतना मैं फिलहाल ए पार्ट के लिए लिख देता हूँ। बी पार्ट, प्रिपेयर अ रिपोर्ट। बी पार्ट, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप कैश फ्लो सेटलिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। ठीक है, अभी यहाँ से सम है, तो ये एक्सेल बंद करके अभी फिलहाल स्प्रेडशीट पे आ जाता हूँ फटाक से। इंट्रा ग्रुप सेटलमेंट, टुडे इज 1 February। ओ ओके शिट। तो वर्ड प्रोसेसर 0102 ठीक है ना? अभी टुडेज डेट इज 1 February। मेहनी कंपनी मैनेजेस फाइनेंशियल रिस्क। ना बीएसपी, ये क्या है? बीएसपी कैलकुलेटर। ओ ओ, बीएसओपी कैलकुलेटर मुझे दिया जाएगा एग्जाम में। नाइस। मुझे बस यहाँ पे वैल्यूज डालनी है क्या? नहीं, मुझे बस यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। ओके, गुड गुड गुड। ये चीज मुझे पता नहीं थी एक्चुअली। बी पार्ट, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अभी। बी पार्ट, अपेंडिक्स 1। Mahoney Company manages financial risk on behalf of the group, including the settlement of intra-group balances. The company has recently introduced a policy to use multilateral netting to settle any balances owed between the companies within the group. The base currency is the euro. The following balances are owed today
between Mahoney and the three of its subsidiary companies. The subsidiary are Yevis, based in Canada, Imran Company, based in Pakistan, and Oliveira Company, based in Brazil. Brazil, Brazil. ठीक है, मेरी बेस करेंसी क्या है? बैलेंसेस आर कन्वर्टेड टू यूरोस। तो ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं। रिक्वायरमेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप मल्टीलैटरल, हाँ, दी मल्टीलैटरल नेटिंग यूनिलैटरल आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। दी मल्टीलैटरल नेटिंग टेबल यूनिलैटरल आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। ये भाई, तो ये आ जाता है मेहोनी कंपनी, येविस कंपनी, इमरान कंपनी, एंड दिस इज ओलिवेरिया कंपनी। टोटल रिसीट्स, यहाँ पे आता है पेड बाय, यहाँ पे आता है पेड टू। टोटल रिसीट्स सम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब मेहोनी कंपनी, येविस कंपनी, इमरान कंपनी, ओलिवेरिया कंपनी, टोटल पेमेंट्स, पेमेंट्स, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे टोटल रिसीट्स, ये 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 और ये। फिर आता है यहाँ पे नेट इफेक्ट। फिर ये क्या, मैं रिसीट्स माइनस पेमेंट्स करता हूँ मैं हमेशा। हाँ, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ वी विल जस्ट डू फिल इन द ब्लैंक्स। मेहोनी ने पे किया इमरान को, ओड बाय मेहोनी पेड टू इमरान, तो ये वाला कॉलम भरेगा। मुझे मल्टीप्लाई, हाँ देखो, मेरी एक ही यूरो है मेरे पास, तो मैं हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा कि डिवाइड करूंगा, बस वो देखना है मुझे। मेरा स्टेबल करेंसी यूरो है, सो पाक यूरो, 1 यूरो इज कितना पाक? 2.18.1692। ओके, और मेरा पाक कितना है? 591, हाँ, तो मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। सो 5913 डिवाइड बाय इतना, तो ठीक है, मुझे इतना इतनी वैल्यू आई। उसके बाद BRL 160, तो BRL क्या था? ब्राजीलियन, शायद ना, ब्राजीलियन करेंसी। ब्राजीलियन कौन है मेरा? ओलिवेरिया कंपनी। मैं मेहोनी ही हूँ, मैंने ओलिवेरिया को पे किया है। कितना पे कर रहा हूँ मैं? 160 डिवाइड, सभी हर जगह पे डिवीजन ही है, 5.2131 भी पे कर दिया मैंने। फिर कैनेडियन को भी सेम, 86 माइनस 1.31, ये हो गया। यविस, अभी यविस क्या कर रहा है? यविस इमरान को पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है? 3713 पे कर रहा है। हम्म। फिर यविस ओलिविया को 456 पे कर रहा है, डिवाइड बाय
5.2131। फिर येविस मेहोनी को पे कर रहा है 138 डिवाइड बाय येविस मेहोनी को पे कर रहा है। हाँ, वो तो यूरोज में ही है। ये वाला वैल्यू तो यूरोज में ही है, 138 हो गया। फिर इमरान येविस को पे कर रहा है। इमरान येविस को कितना पे कर रहा है? इमरान जो है वो येविस को कितना पे कर रहा है? 39 डिवाइड बाय 1.31। ये हो गया। इमरान और ओलिविया को पे कर रहा है 504 डिवाइड बाय 5.2131। टोटल रिसीट हो गया। तो देखो, मेरे ये दो चीजें मेरे नेगेटिव में है। ठीक है ना? सो दीज टू थिंग्स आर इन नेगेटिव, दीज टू आर इन पॉजिटिव। अच्छा, इसको जाने देते हैं। सो नाउ वी विल imply the netting formula and pay off the pending money to subsidiaries. Netting formula क्या रहेगा? Netting principal and pay off the pending money to subsidiaries. कोई ऑर्डर दिया है? The group policy requires balances to be settled in order that the company owing the largest amount in euro settles in your segment amount settles first with the company owing the smallest amount in euro. The group policy the group policy requires balances to be settled in order 6 months time. Owing the highest pays the smallest. So now Yevis yes company will pay Mahoney first. So balance कहता है settling Oliveria Vera company balance uh, to be paid balance to be received by Oliveria. This will be paid by Imran company. Imran company. कैसे? तो ये जीरो क्यों नहीं आ रहा?
Thus, netting will lead to a group balance being zero. ठीक है, ये हो गया, अपेंडिक्स 1 हो गया. नाउ लेटर calculate the results of forward and future markets to hedge the disposal proceeds from disinvestment of Oliveria Company. ठीक है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स बस कैलकुलेट करना है ना. ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट इन ओलिवेरिया, प्लीज बी एक्सचेंज रेट, प्लीज बी एक्सचेंज रेट, प्लीज बी एक्सचेंज रेट. यस. हाँ, एक्सचेंज रेट ही है. चलो ठीक है भाई, इसका क्या हो गया. नॉट दिस, इसको. ओ, आई कैन डू दैट. नाइस. ठीक है, चलो फिर अभी. अभी अपेंडिक्स 2. मेहोनी कंपनी, अरे ये थोड़ा ना से हिल रहा है यार, ये बहुत ज्यादा. दिस इज जस्ट टू अनोइंग. ठीक है. मेहोनी कंपनी हैज फाउंड अ बायर फॉर इट ब्राजीलियन subsidiary Oliveria Company. The buyer is still negotiating the purchase price, but the current expectation is that the sale will generate net disposal proceeds of Brazilian 650 million. Disposal proceeds 650 million Brazilian करेंसी. चलो हो गया. फिर अभी ये होगा 1st ऑफ जुलाई को होगा ये. अभी आगे, ट्रेजरी मैनेजर इज कंसर्न अबाउट Treasury manager is concerned about the exposure to transaction risk and is identified forward and futures as possible methods of hedging the receipt. First, अरे क्या हुआ इसमें? First of all, this is a receipt transaction and money is coming in foreign currency forward contract. अभी ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले, एक मिनट, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स, अरे बहुत ज्यादा एक्चुअली ये दूर बन जाएगा अभी वर्किंग नोट्स का कॉलम. बट ठीक है, आई गेस. यार, व्हाई इज दिस सो फकिंग अनोइंग. वर्किंग नोट्स
एक्सचेंज रेट, ठीक है, मेरे को यूरोस और बीआरएल, मुझे बीआरएल मिल रहा है 650 का। मेरा एक्सचेंज रेट जो है, अब मेरा 1 यूरो के बदले मुझे मिल रहा है 5.3042। 3117। ठीक है, अभी ये हमको दोनों वैल्यूज मिल गए। पैसा अंदर आ रहा है ब्राजीलियन करेंसी में, तो मैं ब्राजीलियन करेंसी लेके बैंक के पास जाऊंगा। मैं बैंक को बेचूंगा तो बैंक मेरे से खरीदेगा। बैंक विल बाय 10, बैंक विल बाय द फॉरेन करेंसी एंड बैंक बाइज एट लो वैल्यू, बैंक बाइज एट वैल्यू वैल्यू एंड 10। लोअर वैल्यू कौन सी है, ये वाली 10। सो द रेट यूज्ड विल बी, सेकेंड, फ्यूचर्स, while we are doing futures, let us take into consideration that we need to find out the number of contracts. So the contract size is in euros, while the receipt is in foreign currency, and so अभी यहाँ पे हम लोग एक्सपायरी डेट के वैल्यू के साथ उसको डिवाइड करते हैं। अभी एक्सपायरी डेट की वैल्यू, मुझे पेमेंट कब रिसीव होने वाला, मुझे पेमेंट रिसीव होने वाला है 31 जुलाई को। फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 6 महीने बाद। मुझे 6 महीने बाद की एक्सपायरी डेट चाहिए। मुझे यहाँ पे जुलाई की एक्सपायरी डेट दी नहीं गई है, तो आई विल यूज फॉर मतलब वो सितंबर। ठीक है ना, वी डो नॉट नीड टू प्रपोर्शनेटेड, एक्सपायरी डेट को हम लोग प्रपोर्शनेट नहीं करते। और ये एक्सपायरी डेट मुझे यूरोज में नहीं दी है, मुझे बीआरएल में ही दी है, सो दैट इज गुड। एक्सपायरी डेट रेट, फिर आता है अभी, इसको करूं कैसे ना, ये 1 2 3, 1 2 3 इन यूरोस
कॉन्ट्रैक्ट साइज मेरी है 5 लाख की। मुझे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल तो जाते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा मिलते हैं। आई हैव टू जस्ट चेक यार, एक मिनट। 350 लिया, 50 के बाद हम लोग 3 जीरो ही लेते हैं ना, हाँ। और यहाँ पे 3.542 बराबर ही है, 5 लाख ही लिया है मैंने। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, बस वही दिक्कत है। मतलब थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर 243। लेट्स वेरीफाई लेटर। अभी हम आते हैं। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट whether we have hedged the entire value as at the date of 31st of July or not. 31st of July or not. We opening, closing, bank will buy at, देखो बैंक विल बाय एट हाई बाय एट लो, वो करना है ना, तो इसको फिर से कंट्रोल सी करेंगे, नीचे लेके आएंगे, कंट्रोल वी करेंगे। अभी स्पॉट रेट हमको चाहिए, तो 5.2091, 5.2171। अभी क्लोजिंग, मेरा क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग मेरे को सितंबर का लेना है, 5.3427। 5.3427। तो मेरे को डिफरेंस ग्रोथ का कितना आता है? 1256 का मुझे आता है ग्रोथ। मुझे टोटल ग्रोथ जो मिली है, इंक्रीज जो मुझे इतने की मिली है। अभी मेरे को स्पॉट रेट कब का दिया है? 1 फरवरी का दिया हुआ है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 9 मंथ्स। सो दिस इज फॉर टोटल ऑफ 9 मंथ्स। आई हैव टू कैलकुलेट टिल जुलाई, राइट? तो मेरे को 2 महीने इसमें से माइनस करने हैं। तो पर मंथ कितना आता है, फिर 2 महीने कितने आते हैं, और फिर मुझे डायरेक्टली 7 मंथ्स कितने आते हैं मिल जाएगा, विच विल बी फॉर 31st ऑफ जुलाई। तो अभी मेरे टोटल ऑफ 9 मंथ्स आए 0.1256। पर मंथ मुझे मिलेगा डिवाइड बाय 9 करके, 2 महीना मुझे मिलेगा इंटू 2 करके, एंड मुझे 7 महीने मिल जाएंगे, 9 महीने माइनस 2 महीने करके। तो मुझे, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, 9 महीने मुझे ऐसे मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे सितंबर का वैल्यू है। ये मेरे सितंबर का वैल्यू है, तो मुझे 7 महीने तक आना है, तो मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस, क्योंकि ग्रोथ था इसलिए 5.314789 आता है 7 मंथ्स का एक्सरसाइज अमाउंट। ठीक है। सो नाउ एज एट द डेट ऑफ 31st ऑफ जुलाई, वी आर obliged to, or we are obligated, sorry, we are obligated to exercise the contract। So रेट कितना है? इतना। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? 243। तो मैं कितने हेज कर पा रहा हूँ, दिस इज द वैल्यू। अभी मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा अभी इसको ऐसे। 3, 2, 3, 10। I am only able to hedge
दिस मच वैल्यू, तो अनहेज्ड वैल्यू कितनी आती है? अनहेज्ड वैल्यू is 650 minus this value is my unhedged value. So now particulars amount rate, um, particulars amount rate and amount, but this is in euros. ये मेरी समरी है फ्यूचर्स की. दिस इज इन BRL. पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? हेज्ड वैल्यू अनहेज्ड वैल्यू रेट. अभी हेज्ड वैल्यू का रेट हमने ऊपर लिया ही था, ये वाला 5.347 जो भी. ठीक है. एंड ये अच्छा, बाय द वे वो लोग ना हमेशा राउंड ऑफ करते हैं. सो लेट अस जस्ट राउंड इट ऑफ. 5.31 कितना है? वो चार मतलब वो डेसिमल तक गए हैं, तो मैं भी 4 डेसिमल तक ही जाता हूँ. राउंडिंग अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स. ज्यादा फर्क तो कुछ आता नहीं है, उतना ही डिफरेंस है. अभी ये जो अनहेज्ड वैल्यू है, ये तो उस दिन के फॉरवर्ड रेट पे ही करनी पड़ेगी. उन्होंने जो नीचे दिया रहेगा उसके बेसिस पे करनी पड़ेगी. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अज्यूम टू मैच्योर एट द मंथ एंड. बेसिस कैन बी अज्यूम टू डिमिनिश टू जीरो एट कॉन्ट्रैक्ट मेच्योरिटी एट अ कांस्टेंट रेट बेस्ड ऑन द मंथली टाइम intervals. The number of contracts should be rounded to the nearest whole number in the calculations. If the अच्छा नियरेस्ट होल नंबर, मैंने राउंड डाउन किया कि राउंड अप किया? मैंने राउंड अप ही किया. ठीक है. Number of calculations. If the amount cannot be hedged using the exact number of futures, the amount, ये देखो इन्होंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है. Then the amount unhedged or overhedged should be hedged using the forward rate. तो फॉरवर्ड रेट उस दिन का 6 महीने बाद का क्या था? अगेन मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक में से बाय करेगी, बैंक बाय करेगी एट अ लोअर रेट, एट अ लोअर वैल्यू. बैंक बाय करेगी एट अ लोअर वैल्यू, मतलब हायर रेट से वो डिवाइड कर होगा. सो 5.3117 तो आता है 122.305. इतना जो है ये मेरा यूरोज में है. 10. पूरे रिक्वायरमेंट कितने मार्क का था? 10. These are the results of our 10. These are the results of कंट्री. कौन सा वाला बेटर है? 122.37 मेरे को रिसीट हो रहा है. 10. सो फॉरवर्ड मार्केट हेज seems to be better for this receipt transaction. चलो डन. तो वी आर डन नाउ. ये वाला पार्ट भी हो गया. Let's move on. Next question. Abhi, briefly discuss using the results from part 1 and 2 above, the advantages and disadvantages of policy to settle intra-group balances. Whether forward or futures market would be better choice to hedge delivery or disposal proceeds. ठीक है, ये वाला बाद में करता हूँ फिलहाल के लिए. Compare the net present value (NPV) in euro of the regeneration project in MACA when either the currency swap or currency option is used to hedge the project's cash flow. When either, अच्छा. अरे भाई, तो मुझे यहाँ पे 7 मार्क के लिए ऑप्शन का ये दोनों करना पड़ेगा क्या? वेट अ सेकेंड.
मुझे आई थिंक लाइन में जाना बेटर होगा इस वाले के लिए। लाइन में ही जाते हैं। The advantage and disadvantages of settling. The advantages and disadvantages of settling the group balances. Advantages. The balances which are long overdue to be paid gets get paid off and does not harm the working capital slash investment opportunities for either of the companies. In simple terms, the sooner the cash reserves are received, the higher the in simple terms, sooner the cash reserves are received, the company can focus on its uh, operations effectively. A total benefit of being a subsidiary or part of a group gets achieved as amount gets achieved. A total benefit of being a subsidiary or part of a group gets achieved. Benefit इसके बाद क्या? In simple terms, sooner the cash reserves are received, the higher the company can focus on its operations effectively. The total benefit of being a subsidiary or part of a group gets achieved. Disadvantages. The currency rates between the countries are different, and thus calculating them back in the base currency, paying the balances off, and then converting them back to their original currency might be a tedious process and can be quite time consuming. The net effect on the balance sheet is the same. हैप्पी और क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी between companies
is maintained. Thus, the chances of frauds taking place get reduced. Certain companies might require cash for a longer period and might not be in the position to pay, or can rather be interested in investing in projects other projects. Thus, the projects. ये हो गया। उसके बाद using derivatives to hedge using derivatives to hedge foreign exchange using derivatives to hedge foreign exchange rates fluctuations used to hedge foreign currency rate fluctuations. Choice to hedge or disposal proceeds for fluctuations or not is quite a debatable topic to begin with अब ये मिलर एंड मॉडिगलन ने बोला था कि नहीं, मुझे याद नहीं। there have been there have been economists who have suggested that economists who have suggested that in the long run, the net effect of hedging such of hedging payments and receipts of the company with foreign suppliers slash suppliers and customers respectively has the same effect as the do nothing do nothing as the do nothing approach. Better choice to hedge always disposals. However, still certain companies feel the need to hedge their foreign transactions, as this gives them a sense
of sense of attempt when attempt being made to safeguard their interest, safeguard their interest, safeguard their position. Now comes the fact that which is a better choice to have always disposal proceeds, the forwards or the futures market, the forwards or the futures market. So as per the calculation, we can see that gives a better net position for the company as compared to the futures market. Better standing position is created for the company. As it has generated a return which is 0.07 million, 0.07 million higher. However, still the decision of whether to opt for futures or forwards depends upon the risk appetite of Mahoney company. चलो डन, ये भी हो गया. अब आगे compare the net present value. Oh shit. Compare the net present value of the regeneration project in amnesia when either the swap or the concept is used in cash flows.
Fourth, Amazia's currency is Amazian dollar, which is currently trading at $12 per 1 euro. Investment proposal represents the first phase of the long-term regeneration project. Assume that Mahoney Company will complete the work for the first phase immediately at an investment cost of, ठीक है, so ये हो गया particulars. तो मैं इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा हूँ? Then operate for the port for the next 3 years in return of an annual operating fee. This fee is based on the expected volume of the traffic through the port. At the end of the third year ownership, the project will be transferred to the Amasian government in return for 2,900 million. To generate, ठीक है, जो भी जनरेशन का है अभी ये ट्रांसफर प्रोसीड्स, फिर आता है ये नेट ऑपरेटिंग फी पोस्ट टैक्स. The board intends to finance the project with a loan, but the treasury manager is concerned about the foreign exchange risk of the project. Mahoney Company Bank has suggested arranging a currency swap with another company. The swap would be for the initial investment cost, with a swap for the principal immediately, and then a swap back in 3 years' time. Both swaps would be at today's spot rate, one $12. ठीक है, swap में क्या हो रहा है? The swap would be for initial investment cost. Swap back in 3 years' time. ठीक है, वो swap would be ठीक है. The expected annual inflation rates are as follows. मुझे inflation rates दिए हुए हैं and then relevant discount rate दिए हुए हैं. ठीक है. मैंने genuinely पूछा. Working notes. First one, exchange rate. Dollars. Amasian dollar. 1.23, 1.18, 1.18. ये इन्फ्लेशन रेट्स हैं. बट एक्चुअली यू नो व्हाट, दिस इन्फ्लेशन रेट ना मेरे को स्पॉट रेट पे लगेगा, हर टाइम 12 पे नहीं आएगा, है ना. यहाँ पे मुझे जो वैल्यू आएगी, वैल्यू डॉलर, जैसे कि ईयर 1 का क्लोजिंग विल बी माई ईयर 2 का ओपनिंग. ईयर 3 का, ईयर 2 का ओपनिंग. 1.18. फिर बेस करेंसी क्या है? 1.08, 1.04, 1.02.
तो ये मेरे एक्सचेंज रेट्स हैं, ठीक है ना। सो माय एक्सचेंज रेट्स, चीज सबसे पहले मैं ना यहाँ पे कैश फ्लोज लिख देता हूँ कि मुझे कैश फ्लो कितने मिले हैं। मुझे कैश फ्लो इतने मिले हैं, ठीक है। अभी लेकिन सबसे पहले ना मैं ये स्वॉप्स का के साथ कर रहा हूँ। तो बिकॉज मैं ये स्वॉप्स के साथ कर रहा हूँ, एक बार हो जाए भाई बस। स्वॉप्स, हाँ, स्वॉप्स के साथ कर रहा हूँ। तो ये मुझे मेरे कैश फ्लोज मिल गए। मैं इस पे मेरे एक्सचेंज रेट लगाऊंगा, जो मुझे आ रहा है यहाँ पे 12। फिर यहाँ पे ईयर 1 का जो क्लोजिंग है वो है इतना। अच्छा, इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी swaps, now we are conducting a swap derivative in which the 1800 being traded will be swapped back at the same rate as that of the year 0. So for the so out of the entire 2900, we will be using the exchange rate of 12 for the 1800, and for the remaining 1100 the rate as on that year ending. तो कैश फ्लोज, हाँ मैंने ऊपर लिखा नहीं है, कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी, कैश फ्लोज इन डोमेस्टिक करेंसी। अभी पहले पहले में तो, अच्छा ये वाला $12 में, ये भी डॉलर्स में ही है, तो डायरेक्ट डिवीजन फॉर द फर्स्ट 0 1 2। उसके बाद यहाँ पे अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1800 पे 12, और बाकी का जो भी बचा है, कितना बचा है, 2994, अरे हाँ 2994 है। मैंने ऊपर 1000 नहीं लिखा होगा। 2994, हाँ यहाँ पे। अब मैं यूज करूंगा 17 पॉइंट समथिंग, जो भी रेट आया है वो, दोनों को डिवाइड करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, कंट्रोल सी सम, ये हो गया 216.5। एक मिनट, 216.5, 216.5 नेगेटिव, हाँ ठीक है ठीक है, बराबर है, इतना बड़ा कैश इनफ्लो आ रहा है, बराबर 216.5। फिर अभी मैं इसके ऊपर यूज करूंगा डिस्काउंट फैक्टर, जो मुझे होपफुली दिया हुआ है 16%, सॉरी 16%। मुझे नॉमिनल है क्या, दिस इज नॉमिनल। अरे मैं रियल करता हूँ ना शायद, शिट। अरे यार, इसमें मैं नॉर्मल करता था कि मैं रियल करता था। अरे ये एफएम का बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। नॉमिनल, बट यहाँ पे ऐसे एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट भी नहीं दिया है ना। 16% ही यूज करता था क्या मैं, 16% से मैंने ब्रैकेट में नॉमिनल क्यों दिया है फिर। अरे यार, ये इधर हक दिया ना मैंने। शिट, शिट। हाँ भाई।
पर मैं 16 ही यूज कर रहा हूँ, जाने देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे यार 16। शिट यार। 0.862, 0.743, 0.641। नेगेटिव में आ रहा है। एक बार चेक कर लूँ क्या? While discounting cash flows, we use nominal rate or real rate. While discounting cash flows, it's crucial to be considered whether you are using nominal or real rate. If you are using the nominal cash flows expressed in current dollars, including inflation, you must use nominal discount rate. Conversely, if you are using real cash flows exposed to constant dollar and excluding inflation, you must use the real discount rate. हाँ, इसको एक्सक्लूडिंग डॉलर्स, हाँ तो मैं तो इन्फ्लेशन के साथ ही कर रहा हूँ ना यहाँ पे सब कुछ। तो फिर ये नॉमिनल तो ठीक है ना, फिर नॉमिनल तो सही है फिर। एक्सक्लूडिंग, अगर कि रियल में इन्फ्लेशन नहीं आता, नॉमिनल में आता है। अगर नॉमिनल में आता है तो फिर यही है जो है। ठीक है ना? तो ये तो इतना बड़ा एक्सचेंज रेट ले लिया मैंने, 13.67 ले लेता हूँ यहाँ पे। ये दिस इज जस्ट फकिंग राउंड अप करूंगा अगर मैं, तो आता है 1.1, मतलब -1.1। मुझे आता है -1.1 मिलियन। ठीक है ना? अब ऑप्शंस। Mahoney's chief executive officer questioned whether the currency swap in year three would be beneficial based on the expected future direction of the exchange rate. As an alternative to the currency swap, he suggested using the 3-year currency option for the purposes of hedging in the final year three cash flow based on the option premium. Uh, based on the option premium of euro 11 million, which is payable immediately. अरे भाई, ना ये प्रोसीड्स है राइट, दिस इज व्हाट एम आई डूइंग, अज्यूम दैट, हाँ मैं प्रोसीड्स ही है ना। नहीं, इन्वेस्टमेंट है, ओके, मुझे वहां पे करेंसी डालनी है। ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस तो मुझे इतना ही दिया हुआ है, सब कुछ मैं सामने से दिया हुआ है एक्चुअली ऑप्शंस में। एक्सरसाइज प्राइस 14.1 डॉलर्स, कॉन्ट्रैक्ट साइज वही नहीं दिया हुआ है ना। हम्म। हम्म। कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया हुआ है बट वो मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट साइज में मुझे लगेगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। नहीं, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया मेरे लिए, शिट। इधर इधर तक मुझे आता है, इधर के बाद मैं रुक जाता हूँ अभी। इसके बाद मुझे नहीं आता है। गुड। वेल डन साहिल भाई। प्रीमियम -11 मिलियन पे बैठा है। एक्सरसाइज प्राइस है 1 पर यूरो की, ठीक है ना? पर यूरो की एक्सरसाइज मिलियन है 14.1। ठीक है। यूरो की। तो ठीक है ना, मैं अगर एक्सरसाइज प्राइस मेरी 14 है तो मैं काम कर देता हूँ। 14.1 है, मैं एक्सरसाइज कर देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। मुझे ईयर में कितना आ रहा है? 2,900 आ रहा है, डिवाइड बाय 14.1। नहीं, बहुत ज्यादा आ गया, शिट। नहीं नहीं नहीं, दिस इज जस्ट रैंडम शिट जो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। जाने देते हैं इसको, जाने देते हैं। लेट बी, लेट दिस थिंग बी।
pending for now. रिक्वायरमेंट्स में मुझे क्या करना है, वे डिस्कस यूजिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम पार्ट फॉर, डिस्कस ही करना है whether the currency swap or currency option would be a better choice to hedge the year, and any assumptions made, the assumptions that were made, regeneration of the project, whether regeneration project should be undertaken. वर्ड प्रोसेसर पे आ जाता हूँ. Assumptions there are various assumptions which have been taken into consideration while in the calculation of estimating the project through both the currency swap and currency option. They are as follows. First assumption, the inflation rates in both the countries for the upcoming 3 years have been pre-calculated. The basis of the calculation, however, seem to be missing, and thus the validity is affected. The cash flow projections seem to lack the entire calculations. Only the net operating fees, only the net operating fees post-tax have been provided for the next 3 years. A huge assumption made is the fact that the company will be a going concern by then. A bigger assumption, investment, the positive figures right from year one seem to indicate an optimistic approach being used. Also, it has been assumed
that Mahoney will complete the work for immediately. No further investment cost in terms of additional investment or additional asset investment or working capital requirements have been made. Volume of traffic through the port. Volume. Not just that, but also it has been assessed that the fees based on the expected volume of the port. The fee is based on the expected volume of the port. So might not be the case. Could also be fixed or be based upon other variable factors. Tends to the loan of the treasury is concerned with foreign exchange rates. Many companies banks are arranging currencies for. ये हो गया फिलहाल तो better choice. The face of it, we can see that Mahoney company has generated a negative NPV while conducting its operations through a swap. But we did not take into consideration the interest on loan. इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह कुछ नहीं लिया ना हमने एक्चुअली हुआ करता था लोन not take into consideration the loan no board under तो इन्होंने यहाँ पे पोस्ट टैक्स ही दिया हुआ है तो पोस्ट टैक्स का मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी कटा हुआ ही होगा और टैक्स का रेट भी नहीं दिया है तो आई थिंक उन्हें बराबर का कैलकुलेशन ही किया रहेगा सो thus it should not be selected still the decision whether this is made by the board of directors whatever thus it should not be selected however the decision whether or not to and the further detail has been made by the board of directors
वो तो ठीक है। It should be duly noted that the entire value does not get hedged. Credit claim rate in year zero, and so out of the entire million of 12, the swap option for only the we have to use the rate the year ending of year 4 when we come to the options. We are obliged to pay premium at first. We have to note that the options are one of the most expensive derivatives. Derivatives. We are obliged to pay the premium at first, irrespective of the fact that whether we exercise the options on the date or not, thus requiring the company to make a huge इन्वेस्टमेंट उनका ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इतना ही मैं लिख पाया हूँ वैसे, सच बताऊं तो। एंड देन लास्ट फेज में तो क्या था, whether regeneration project should be undertaken or not। तो इसको ऐसे बस तुक्का मारने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, whether the regeneration project should be undertaken or not, yes, the regeneration project should be undertaken। यस द रीजनरेशन प्रोडक्ट शुड बी। एक्चुअली स्वॉप्स में नहीं आया था और इसमें आया था ऑप्शंस में। एक बार नो लिख देता हूँ, नो द नो द रीजनरेशन प्रोजेक्ट शुड नॉट बी अंडरटेकन as it does not seem to be the most profitable or does not seem to provide better returns for Mahoney company, and the fact that the same funds can be utilized somewhere else could provide company with much better return company with much better returns, uh, and as the company's management has to act in the
best interests of the shareholders and protect shareholder wealth. The project should not be selected. चलो बस इतना लिख देता हूँ। अभी प्रॉपर 8:30 बज गए, मेरा टाइम भी खत्म हो गया है। दिस इज माई एंटायर आंसर। तो ये मैंने 1 आवर 30 मिनट्स में लिखा। एंड नाउ वी हैव टू चेक कि ये सही है कि नहीं है पूरा आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। लगता है मैंने काफी हद तक ये छोड़ लिया। लास्ट वाला तो छोड़ ही दो, लास्ट वाला तो बहुत बेकार लिखा है मैंने, 7 मार्क्स वाला। ये डिसएडवांटेज एडवांटेजेस में बहुत ज्यादा टाइम चला गया। whether futures और ऑप्शन आर बेटर चॉइस और नॉट, उसमें भी एक्चुअली हेजिंग। ये वाला मैंने ठीक है, ये वाला मैंने 5 मार्क्स से थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया। ठीक है, बी वाले पार्ट को एक्सप्लेन नहीं किया है, ए वाले पार्ट को किया है। बी का जो मैंने बनाया है ना रिपोर्ट, वो मैंने B3 के लिए, जैसे मतलब वो लिखना चाहिए था B3 ऐसा। फिर ये फिफ्थ वाला चॉइस। ठीक है, ये स्प्रेडशीट चलो अभी चेक कर देते हैं। आई होप थोड़ा बहुत तो सही हो, एटलीस्ट चेक करते हैं अभी मेरे पास ये होगा। आंसर्स ए जाने दो अभी, ये वाले बाद में, थ्योरी बाद में देखते हैं, पहले सम्स वाला चेक कर लेता हूँ। ये रहा। इन नेटिंग नेटिंग इस उसमें ही काफी इजी, मतलब उतने में नेटिंग थोड़ा बेटर लगता है। तो ये नेटिंग अमाउंट मुझे लगता है बराबर ही आएगा, तो इसको जाने देते हैं। अपेंडिक्स 2 में आ जाता हूँ, डिस्पोजल वाले प्रोसीड्स के ऊपर। ठीक है, 122.3। हाँ, ये सारे कैलकुलेशन मैंने मिलियंस में किए, ये मैं दिखाना चाहिए था, बट ठीक है। ये देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही आया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये इजी था। लेकिन फ्यूचर्स इज द रियल डील। फ्यूचर्स में मुझे एक्चुअली मिला है, ओह शिट, नहीं यार। मुझे मिला है 122,380। मुझे यहाँ पे फ्यूचर्स में कितने मिले थे? 122,3 मिले थे। चलो चेक करते हैं क्या हमने मिस्टेक की है। 1.5/8 महीने थे। लॉक यहाँ पे 9 महीने थे ना, कि 8 महीने थे? वेट अ सेकेंड। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओ दिस इज 8 मंथ्स। अरे मैंने 9 मंथ्स ले लिया। ओ माय गॉड, दिस इज सो स्टूपिड भाई। ये अभी तो कुछ नहीं हो सकता, बट फिर अभी इसको डिवाइड बाय 8 करेंगे, तब जाके इसको आएगा 4। तो इसका 7 मंथ का पीरियड चेंज हो जाएगा। और या ऑफ कोर्स देन रेट जो मैं ये वाला लूंगा। तो ऑब्वियसली वो नेटिंग वाला में थोड़ा सा बदलाव तो आएगा। ये देखो आ गया 122,380। तो ऑब्वियसली उसके बाद तो फॉरवर्ड मार्केट में लेना ही नहीं चाहिए, उसके बाद तो फ्यूचर्स में ही लेना चाहिए। शिट यार, व्हाट द हेल। जो मुझे मुझे पता है क्या था, मैं ना जनवरी फरवरी मार्च में ऐसा किया रहेगा। शिट डूड। रिसीट है ना, तो जो हायर होता है वही होता है। तो इसमें 12238 और इधर 12237, तो कौन सा हायर है? तो 12238 हायर है, तो इधर फ्यूचर्स मार्केट हेज में ज्यादा बेटर बेनिफिशियल।
नाउ वी कम डाउन टू स्वॉप। स्वॉप्स में एनपीवी -1, एंड मुझे भी एनपीवी -1 ही आया था। इन्होंने हर जगह पे राउंड अप किया हुआ है, मैंने राउंड अप नहीं किया हुआ, इसलिए मेरे को 1.1 आया, इनको 1 आया। ठीक है, दैट इज फाइन। लेटर करेंसी ऑप्शंस, हाँ ये देखो, मुझे इधर तक तो आ रहा था। करेंसी ऑप्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। करेंसी ऑप्शंस क्या है, क्या बोलता है? ओ वाओ, करेंसी ऑप्शन देखो कितना आसान था। करेंसी ऑप्शन में कुछ था ही नहीं। करेंसी ऑप्शन में प्रीमियम लगाना था -11 का ईयर 1 में, कि वो हम पे कर रहे हैं, और कैश फ्लो में 212 आएगा अपेरेंटली। ये वाला 212 क्यों आएगा वो देखते हैं, लेकिन हम सबसे पहले ऑप्शंस वाला यहाँ पे लिख देते हैं ना। तो ये ऐसे तो नहीं करना होता ऑप्शंस को। आई विल कॉपी पेस्ट द एंटायर थिंग ओनली बिकॉज मुझे वैसा सही लगता है। तो everything, एक्सचेंज रेट जो ऊपर दिए हुए हैं ना वही एक्सचेंज रेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है एक चीज जो है, प्रीमियम इज -11, एंड कैश फ्लोज में बदलाव आता है। 212 आ जाते हैं कैश फ्लो। अभी 212 कैसे आते हैं मुझे वो देखना है। हम भी खुद से ट्राई करें क्या? एक मिनट जरा, क्वेश्चन कहाँ गया वो क्वेश्चन? यहाँ पे होगा ना वो क्वेश्चन, तो मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। ये मेरा थियोरी आंसर है। वर्ड प्रोसेसर रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन कहाँ पे है यार, मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है? हाँ, ये रहा। अच्छा, मतलब यू आर राइट, यहाँ 16% ही यूज करना है नॉमिनल रेट, बाय द वे वो हमारा बेट सही था। फिर हम्म, मेरे लोग क्या बोलते हैं, विच इज पेएबल इमीडिएटली एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ दैट करेंसी ऑप्शन 14.1। 14.1 तो ये उस दिन का एक्सचेंज रेट है, 14.1 पर यूरो। इधर तो इधर मैं लिख देता हूँ 14.1। अरे, इधर मैं लिख देता हूँ 14.1। 212 आ गया देखो। कुछ नहीं करना था, बस ये प्रीमियम -11 और यहाँ पे एक्सचेंज रेट 212 करना था, बस इतने चेंजेस करने थे। हमको आंसर और नेगेटिव में आता है, 4.72 आता है, लेकिन क्या वो सही है? नहीं, इनको 15 आ रहा है। द हेल, द हेल, व्हाट आर वी डूइंग व्हिच इज कमिंग रॉन्ग? आई सो 61। ये लोग ने सारे चेंजेस कैश फ्लोज में ही किए हुए हैं इसके लिए। उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? सी हियर वेरी केयरफुली, दे हैव रिटन यूरोज 11 मिलियन। और जब मैं एक्सचेंज रेट के जब मैंने यहाँ पे -11 लिखा था, तो इसका क्या मतलब है कि ये डॉलर्स में है। तो मुझे एक्चुअली क्या करना है, इसमें ही मुझे इस ये फॉर्मूला बार में प्लस ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ -11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली -11 डाल दिया, तो -161 आ गया मेरे को। सो बिकॉज ऑफ ऑल द राउंडिंग अप एंड ऑल, हम हमको उनको आया -15, हमको आया -14.8। -14.8 मिलियन एनपीवी नेगेटिव। ठीक है, और कुछ नहीं था ऑप्शन में, जेन्युइनली कुछ नहीं था। बहुत बेसिक था एक्चुअली ऑप्शंस। वी डिड इट रॉन्ग, वी फक्ड अप द सॉल्यूशन फॉर ऑप्शन। स्वॉप्स का सही था, ठीक है।
एंड थ्योरी उन्होंने उन्हीं के बेसिस पे लिखी होगी। मैं बाद में थ्योरी पढ़ लूंगा, क्योंकि जेन्युइनली अभी तो दिमाग घूम रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना? यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस थ्योरी व्हेनेवर यू